Good morning all of you. I am a teacher of Northride Public School. Welcome to our school. जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है जो कि है स्पोर्ट्स वीक। इस को हम हर साल दिसंबर में करते हैं। जो स्पोर्ट्स वीक चलता है हमारा, ये बच्चों के लिए हम नर्सरी से लेके जो 8th क्लास तक है, तब उन सभी बच्चों के लिए हम इसमें गेम्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर इंडोर गेम, आउटडोर गेम सारे गेम आते हैं। और इस वीक को 2-3 दिन हमारे नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे 2-3 दिन करके बड़ी क्लास में एक प्रोग्राम होते हैं। और उसके बाद जो भी विनर होता है उसको हम प्राइज़ या मेडल वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो यहाँ बच्चे हैं ये लोग चीयर अप कर रहे हैं हमारी नर्सरी क्लास को और प्ले के बच्चे को। और आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों के मन में भी बहुत सारा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये गेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों का एक तो इंटरेस्ट रहता है, वो लोग इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं वो बाहर आते हैं। क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे हमारे कल के दिन फ्यूचर में हमारे ओलंपिक्स में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में बहुत सारे जो क्रिकेट वगैरह, हॉकी वगैरह जितने भी गेम्स होते हैं उनमें कल के दिन ये कोई ना कोई अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आइए नैना मैम, बताइए आप कुछ स्पोर्ट्स डे के बारे में जो भी चल रहे हैं हमारी स्पोर्ट्स वीक। We are organized some games for our kids. First game is fruit collective game. जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने इसमें बहुत सारे फ्रूट्स बनाए हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। तो मैम अनाउंस करेगी कि विच फ्रूट इज पिक अप द चिल्ड्रन come and pick the fruit and throwing bucket. And second game is collective ball according to color. जैसे कि आपको बताया हमारी नैना मैम ने कि हमारे यहाँ 2 गेम्स होंगे। जैसे कि आपने देखा है कि बकेट में उन्हें बच्चों ने डालने हैं, जो भी फ्रूट को मैम अनाउंस करेंगी, बच्चे उसको इसमें से पिक करेंगे और उसे बकेट में डालेंगे। चलिए मैं आपको एक झलक अपने चीयर अप, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो कि नर्सरी को चीयर अप कर रहे हैं, मैं उनको दिखाती हूँ आपको। डूडू बेटा, ये देखिए कैसे ये लोग अपने छोटे छोटे भाई बहनों को और अपने छोटी क्लास के बच्चों को चीयर अप कर रहे हैं। ये भी आपको शायद ही कहीं किसी स्कूल में देखने को मिलेगा। और आप जब पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसकी तैयारी हमारी जो मैम लोग हैं नर्सरी KG 1 KG 2 के, उन लोगों ने बड़ी ही मेहनत से 1 वीक से इसकी प्रिपरेशन वो कर रहे थे। तो देखिए कितना सुंदर उन्होंने इसको बनाया हुआ है।
अपनी बकेट में डालिए। एप्पल, देखिए देखिए एप्पल, ऑरेंज, now green, green clear, now mango. Now banana. Give me one name, banana. Banana, banana. Now it's strawberry. 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 Pear नहीं चाहिए। कैडबरी सालन, ग्रेप्स बनाने की ग्रेप्स नहीं करना है वापस से करना है आपको कितनी टाइम तक करके दो Now strawberry, strawberry. Done? Strawberry. Banana, banana, banana. Apple, apple.
hands now. You can use your hands. Babu, please move back. Priyash is the winner. Priyash.